3 घंटे 27 मिनट डिले के साथ रेंगियार खान पे अप्रोच बना रहे हैं। यहाँ पे भी अमूमन रश होती है, उसी तरह रश बहुत ज़्यादा है। 2 ट्रेनें चलने की वजह से रश मज़ीद बढ़ गए हैं। दोनों ट्रेन में खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं लोग, इतना रश हो चुका है। स्टॉल यहाँ भी सारे बंद हैं। तकरीबन 7 मिनट के स्टॉप के बाद रेंगियार खान से डिपार्ट होगा। रात को पूछेंगे हम लोग यहाँ से मैक्सिमम जो सवारी आई है वो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रेलवे ज़रात हैं जो रायगढ़ जाते हैं। पंजाब का एक बड़ा शहर है रेंगियार खान, लेकिन स्टेशन के हालात सही नहीं है। अच्छा अभी पूछ रहे हैं पाँच मिनट के स्टॉप के बाद डिपार्चर हो रही है खानपुर से।
3 घंटे 25 मिनट डिले हो चुकी है अभी तक। अब खानपुर तक काशन था तो समझ आती है डिले हुई। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। और करो जल्दी पूछे आधा घंटा रुकिए मत काम अभी कहाँ रखे ना 12 भी नहीं हुए। अभी यहाँ पर तेजी में चला रहा है और जैसे 10 फुट बहुत ऐसे नहीं कर रहे देखा था ना कितना से टैक्स लिया था। अब ले भी रहा है जो किसी से
है खबर में 105 छठा बुद्धा के बाद क्वेश्चन खत्म हुआ और अब स्पीड चेक कर रहे हैं। कानपुर तक 3 घंटे 25 मिनट डिले हुई क्वेश्चन की वजह से 60 के ऊपर क्वेश्चन था और 60 तक आएगी बात। पानी पीना गिलास भी वन आप डेरा नवाब साहब पे अप्रोच बना रही है 3 घंटे 40 मिनट डिले के साथ। वो डाउन का स्टेशन उसका आज गाड़ी जो है ना बड़े रनिंग स्टेशन पर वो रुकती ये रुकती छोटा स्टेशन यहाँ दूसरी नहीं रुकती। इनको लूप लाइन का लेकर और मैन लाइन से वो निकालते हैं एक्सप्रेस ट्रेन।
हमारा खैबर भाई समासटा पे प्लॉट बना रही है 3 घंटे 50 मिनट के साथ। पाकिस्तान रेलवे डाक बंगलो फॉर ऑफिसर्स। समासटा जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से बावल नगर चक कमरू ब्रांच लाइन निकलती है, जो आजकल अबेंडेंड हुई है। उस पर वर्किंग जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहाल होने वाली है ब्रांच लाइन। चैन सरहद मुअत्तल होने से स्टॉल यहाँ भी बंद पड़े हुए हैं। सॉरी, बावल नगर अमरूका ब्रांच लाइन निकलती है चक अमरू में। गर्म होगा बहुत, उबला हुआ। समासटा जंक्शन पे उबला हुआ पानी। ये जंक्शन बगदाद, हासिलपुर, चिश्तियाँ, बावल नगर, मंडी सादकगंज, मंचनाबाद, अमरूका ब्रांच लाइन जो अभी क्लोज़ पड़ी हुई है। उम्मीद आने वाले दिनों में बहाल हो जाएगी, वर्किंग जारी है उस ब्रांच लाइन पे। बहुत बड़ा यार्ड है समासटा जंक्शन का। सामने आपको 2 कोचेज नज़र आ रही हैं बाबा फरीद एक्सप्रेस की। यस आई एम राइट, बाबा फरीद एक्सप्रेस की कोचेज खड़ी हैं जो यहाँ से अटैच होती हैं और उतरती हैं। सामने स्टैंडर्ड गैस की लाइन देखें जिस पर कोशिश करनी है। तो ये वो ब्रांच लाइन है जो जिस पर अभी वर्किंग जारी है। ये जंक्शन पॉइंट है समासटा का, बावल नगर अमरूका ब्रांच लाइन। इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में लाइन क्लियर हो जाएगी। फिर हमें उम्मीद है कि
ट्रेन सर्विस बाहर है। वो सामने ब्रांच का है। समासदा जंक्शन से निकलते एक लॉन्ग कर्व आया है, आप देख सकते हैं।